Good evening to all of you, dear aspirants. I think I am only 4 minutes delayed due to some interruptions related to internet and electricity. So let us begin our day today. I think today is Friday, and on Friday we take up science and technology. So, Sarchi, very good evening. Let us wait for a while for yes, other students to join me. Mr. Kailas Prasad, very good evening. So during previous class, we had discussed a lot about the uh, DRDO, that is missiles. Yes. Today we are going to have some questions related to biotechnology, nanotechnology, then space technology, and a lot of other important segments. As you know very well that science and technology is very important segment. Out of 100 questions in prelims examination, dear aspirants, you will find not less than 20 to 25 questions from this segment, including environment. So साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण से भी जो प्रश्न है इसी में समाहित होते हैं. So dear aspirants, this subject is very important as far as prelims examination is concerned. So let us have some important questions. आज हम आपको विज्ञान और तकनीकी में कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार कराएंगे, और जब तक हमारे सभी अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हो जाते तब तक कुछ करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्नों पर विचार होगा. डियर एस्पिरेंट्स, मिस्टर परशुराम मिश्रा हैज सेंट मी क्वेश्चन जो अभी वर्तमान में तमिलनाडु सरकार के द्वारा, जो वहां की विधायिका के द्वारा जो विपत्र लाए गए और उस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पर विचारण करते हुए न्यायाधीश, okay, the judicial decision given by the Honorable Supreme Court of India, that is very much in discussion because पहली बार न्यायपालिका ने राष्ट्रपति को कोई आदेश जारी किया. राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, देश का सर्वोच्च, उससे बड़ा कोई नहीं है. बट द सुप्रीम कोर्ट हैज डेयर्ड टू पास एन ऑर्डर, रादर डायरेक्शन दिया है कि राष्ट्रपति को किसी भी विपत्र को रोकने का अधिकार नहीं है. 1 महीने अथवा मैक्सिमम विद इन 3 months, दैट इज 90 days के भीतर उस पे अपना आदेश, अपना हस्ताक्षर करना ही करना है. और यदि डिसेंट है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल, देन ही और सी हैज टू रिटर्न, उसे लौटाना ही लौटाना है. सो डियर एस्पिरेंट्स, ये सबसे बड़ा एक, इसे माना जाए न्यायपालिका अथवा विधायिका से संबंधित न्यायादेश पारित हुआ जो चर्चा का विषय बन गया. ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश के उपराष्ट्रपति महोदय के द्वारा भी इसको संज्ञान में लिया गया. एंड ही हैज आल्सो, यस मिस्टर आलम, मोहम्मद आलम, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग. सो उनके द्वारा भी इसको संज्ञान में लेकर के काफी कुछ कमेंट्स दिए गए. दैट इज वेरी मच इन द हिंदू नेशनल डेली, और वो आपकी नजरों से गुजरा होगा. आई डोंट वांट टू कमेंट अपॉन ऑल दोज थिंग्स. ये हमारे स्तर की चीज नहीं है कि मैं इन सारे गंभीर विषयों पर आपसे शेयर करूं. यस मिस्टर विकास प्रजापति, वेरी गुड इवनिंग. A little bit late, I think, and I have also started this class today 4 minutes delayed due to some electricity issues or internet, whatever may be. So we were discussing about
the query put forth by Mr. परशुराम मिश्रा, और उस पे मेरा यही कुछ करना है कि कभी कभी जुडिशियरी के द्वारा विधायिका पे, लेजिस्लेचर पे इंक्रोच किया जाता है, और संसद से बड़ा इस देश में कुछ भी नहीं है, बिकॉज वी हैव डेमोक्रेसी। हम लोग एक प्रजातांत्रिक देश में रह रहे हैं, और जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यदि कोई कानून बनाया जाता है, कोई नियम बनाया जाता है, सो दैट इज मोस्ट मोस्ट वैलिड। अब उस नियम पे यदि किसी को कोई प्रतिकार है, सो दैट शुड बी रिमेडिड, रिलुक्ड, रिविजिटेड ओनली थ्रू द पार्लियामेंट। किसी भी अन्य को उस पे प्रतिकार करने का अथवा किसी प्रकार का संवाद करने का मैं नहीं समझता कि कोई वैसा राइट संविधान में उल्लेखित है, डियर एस्पिरेंट्स। लेकिन कभी कभी ये टसल हो ही जाता है। वाइल मिसेस गांधी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, उस समय न्यायपालिका और संसद के बीच में काफी कुछ चला। 42nd अमेंडमेंट, संविधान का 42वां संशोधन 1976 1976 में आया, और उसके द्वारा भी कई बार विधायिका और न्यायपालिका आमने सामने आ गए। सर जी, यूट्यूब पर चैट का ऑप्शन नहीं दिख रहा था। ओके ओके, दिस ऑप्शन इज वेरी मच देयर, यू मे राइट योर क्वेश्चंस व्हाटसोएवर। जो भी आपके प्रश्न हैं आप चैट बॉक्स में लिखें। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यस। सो मिस्टर परशुराम कुमार इज हियर and I am discussing your question, Mr. Misra ji. So let us have some more questions related to the science and technology, because today is Friday, और ये जो न्यायपालिका और विधायिका के बीच में तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में हो चला है, इस पे अब हमारे स्तर से नो कमेंट्स, बिकॉज बेसिकली वी आर सिविल सर्वेंट्स, और जो सिविल सर्वेंट होता है तो उसका मुंह सैलो टेप से बंद होना चाहिए। मेरे विचार से कान खुला होना चाहिए, जनता की आवाज को सुननी चाहिए, समाधान निकालना चाहिए, बस इतना ही। और वो समाधान सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अनुकूल होना चाहिए। नथिंग शुड गो अगेंस्ट द लॉ। गैर कानूनी काम कुछ भी नहीं करना है, ईमानदारी से काम करना है, कर्तव्य निष्ठा से काम करना है, गरीबों की सेवा करना है। दिस शुड बी केप्ट इन व्यू, डियर एस्पिरेंट्स। तो इस प्रकार से, और पत्रकार लोग अथवा समाचार पत्र में तो बहुत तरह तरह की बातें आएंगी, ये गलत है, ये सही है, बट यू शुड नो गो इनटू ऑल दोज कमेंट्स, बिकॉज आप पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। आपको देश की सेवा करना है आईएएस के रूप में, डीसी के रूप में। यू हैव टू रूल, और वो रूल नहीं जो ब्रिटिश सरकार ने किया, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य में हम लोग रह रहे हैं, डियर एस्पिरेंट्स। सो लेट अस हैव सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Oh, thank you, Mr. Parsuram Kumarji, and I am sure that you have understood whatever I have narrated before you. Now, let us see. Recently, which space organization announced plans to build the first railway station on the moon for efficient payload transportation? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पहला सवाल। चंद्रमा पे रेलगाड़ी चलाने की योजना है। वाई? व्हाट इज द पर्पस? रेलगाड़ी चंद्रमा पे, चांद पे, या इट इज वायबल? अब आपको बताना है कि वो कौन सा स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, अंतरिक्ष संगठन संस्था है जो रेलगाड़ी चलाने वाली है। ए इसरो, बी नासा, सी जाक्सा, and D, ESA. What is the full form of ESA? European Space Agency, dear aspirants. And as far as JAXA is concerned, it's Japanese Space Agency, ISRO Indian, and NASA American. So are you able to answer this question? If yes, then please tell, write in chat box. I will be happy enough to see your answer. Yes. So if your answers are not coming, JAXA, Mr. Vikas Prajapati, it's NASA. Okay, NASA is the answer. NASA announced float, FLOAT. Please write it in your
Notebook, flexible leviation on a track, float, FLOAT, flexible leviation on a track, the first lunar railway system aiming to transform cargo transfer on the moon, float part, NASA's Moon to Mars initiative. चूंकि नासा का इनिशिएटिव क्या है, चंद्रमा से मंगल ग्रह पे जाना. यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ इलोन मस्क. अमेरिका में इलोन मस्क का नाम तो बच्चा बच्चा जानता है. उनकी योजना है मंगल पे बस्ती बसाने की. चूंकि पृथ्वी पे सारे वैज्ञानिक समझ रहे हैं कि अब पृथ्वी की आयु नहीं है. इतना पोल्यूशन. दिल्ली के बारे में, इफ यू आर लिविंग इन दिल्ली, यू माइट हैव हर्ड, हवा कितनी जहरीली हो गई है. सभी जगह टन के टन कचरा निकाले जाते हैं, लेकिन उसे कहां डंप किया जाता है, दैट इज द मैटर ऑफ डिस्कशन. सो डियर एस्पिरेंट्स, अर्थ से उठकर कहीं जाना है साइंटिस्ट साथ, और जो भी हैं एक्सप्लोरर्स, वे एक्सोप्लैनेट की खोज में हैं. सो फ्लोट, that is a part of NASA's Moon to Mars initiative, utilizes unpowered magnetic robots. चुंबकीय रोबोट की तैयारी हो रही है, ओके डियर एस्पिरेंट्स, ऑन ए 3-layer flexible film track. So these robots leviate above the track, reducing wear from moon dust and offering dependable transportation for sustainable lunar colonies. So this is very much in the air. That's why I have brought in your notice. So the correct answer is NASA, not JAXA. Let us have next important question, and this we have I have taken from the Hindu newspaper, dear aspirants, and it relates to NASA. Yes, Raghava, very good evening, and you are joining me from Karnataka. So wonderful. Which company recently introduced its most capable large language model, LLM, the Llama 3? A, Google, B, Microsoft, D, C, Meta, and D, Amazon. Now you have to answer out of these 4 options, dear aspirants. After proper examination, verification, you should write your answer. Which company recently introduced its most capable large language model, LLM, the Llama 3? A, Google, B, Microsoft, C, Meta, and D, Amazon. So if you have got the answer, you should write it in chat box. Since you are not answering, the right correct answer is C, Meta. Meta recently unveiled, yes, wonderful, Mr. Parasuramji. You have attempted, at least you have attempted. So the correct answer is Meta. And dear aspirants, आपने इसको देखा होगा. Yes, Mr. Alam, your answer is correct. Kailash Prasad ji, your answer is B. So built on Llama 2 architecture, it offers models with 8B and 70B parameters, including instruction tuned versions for specialized tasks like AI. Do you know AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैटबॉट्स. ओके, आपने आजकल देखा होगा, देयर आर सो मेनी चैटबॉट्स. ओके, boasting on 8,000 token context length, it's integrated into platforms like Facebook, WhatsApp, accessible via the Hugging Face ecosystem. So dear aspirants, this is all about Llama 3. The spelling is double A, okay, double LAMA. Yes, Meta is the correct answer. And here is thumbs up for your correct answer, Mr. Vikas Prajapati. So, what is choline recently seen in the news? This was very much in the news. That is Hindu newspaper, CHOLINE. A, nutrients. B, pesticide. क्या ये कीटनाशक है अथवा कोई पौष्टिक पदार्थ है, वायरस है, या इन्वेसिव प्लांट है? What does it mean, dear aspirants? So the answer is A. The answer is A. It's a nutrient. The spelling is CHOLINE. The researchers recently found that
FLVCR2, a protein, facilitates the transportation of essential nutrient choline, CHOLINE, into the brain. Choline plays a crucial role in cellular growth and metabolism, existing in both water and fat soluble forms. While the body can produce choline in the liver, dietary intake is necessary to meet daily requirements. Rich sources include meat, fish, dairy, eggs, as well as various fruits, vegetables, and whole grains. So this is all about, yes, Mr. Raghava, your answer is correct. Nutrient, this is the correct answer. So now let us have another very important questions, और ये प्रश्न हमारा पोलर मिशन से रिलेटेड है, और इसको हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं. प्री फायर, PREFIRE, what does it mean? So pre-fire polar mission recently seen in news is developed by which space organization? कौन सा वो अंतरिक्ष संस्था है जिसके द्वारा प्री फायर पोलर मिशन की शुरुआत की जा रही है, उसे विकसित किया गया है. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन? वंस अगेन CNSA, NASA, ESA and JAXA. These are the four options and you have to pick the correct option, dear aspirants. So pre-fire polar mission, it is going to be launched from New Zealand. न्यूजीलैंड आपने नक्शे पे, विश्व के नक्शे पे देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया के साउथ में, यू में से साउथ ईस्ट में न्यूजीलैंड, एंड इट इज गोइंग टू बी लॉन्च्ड ऑन May 22. मई 22 को ये लॉन्च होने वाला है. इट इन्वॉल्व्स ट्विन सैटेलाइट्स मेजरिंग अर्थ पोल्स 6 आवर्स अपार्ट. ओके, सो 6 घंटे के अंतराल पे पृथ्वी के दो जो ध्रुव हैं, विच पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो उसका ये मेजरमेंट करने वाले हैं. द मिशन एम्स टू रिवील द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हीट लॉस फ्रॉम पोलर रीजन्स, इंप्रूविंग क्लाइमेट मॉडल्स. आजकल के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती है, द बिगेस्ट चैलेंज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ इज क्लाइमेट चेंज. अचानक से जलवायु परिवर्तन, गर्मी, जाड़ा, बारिश हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स ओके समुद्र में विलीन हो जाते हैं. सो क्लाइमेट चेंज इज द बिगेस्ट चैलेंज nowadays, dear aspirants. Now let us have this mission. So this mission aims to reveal the full spectrum of heat loss from polar regions, improving climate models. Pre-fire is going to address knowledge gaps, enhancing predictions of climate change. मतलब जलवायु परिवर्तन होगा, किस भांति होगा, किस प्रकार होगा, किस मेजरमेंट में होगा, दिस इज गोइंग टू प्रेडिक्ट, ये पहले से बताने की योजना है. एंड सी लेवल राइज, समुद्र के जल स्तर में जो अचानक से परिवर्तन हो रहा है, जल स्तर में उठाव हो रहा है, जल स्तर, यस, विकास प्रजापति इज राइटिंग NASA is the correct answer. NASA is the correct answer, dear aspirants. Now predictions of climate change sea level rise by providing new data on how Earth's atmosphere and ice influence heat radiation from Arctic and Antarctic. Dear aspirants, आप सभी जानते हैं आर्कटिक, नॉर्थ पोल, अंटार्कटिक, साउथ पोल. तो इस प्रकार से इसको भी हमने आपके नॉलेज के लिए नॉलेज में डाला. नाउ लेट अस हैव सम अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड यहां पे हम कुछ PYQs. What do you mean by PYQ? That is the previous year questions. तो उस पे आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे, so that you should be able to understand what is the pattern of UPSC. UPSC ने क्वेश्चन पूछा, लेकिन आपने उसका पैटर्न नहीं समझा, then you are half prepared. So let us have, which of the following genetically modified, that is in brief GM, genetically modified crops are legally allowed to be cultivated in India? GM mustard, BT cotton, BT brinjal. So this question is very, very important, dear aspirants. Select the correct answer with the code given below. A 21ly, B 23 C 13 and D 123. So now you have to put your answer in chat box.
Dear aspirants, which of the following genetically? Yes, Mr. Raghava is answering C, Mr. Parsuram is answering C, and both of you are correct. Very, very correct. So, dear aspirants, let us have another question. Next question, that is Himawari 9. You might have heard it. What is Himawari 9, which was recently in the news? Yes, Kailash Prasad ji, your answer is also correct. Satellite launched by ISRO to study about the Himalayas. Okay. B, a next generation meteorological satellite launched by JAXA. C, a space observatory launched by Japan. And D, meteorological satellite designed by NASA. So what should be the correct answer? If you have got the answer, please write it in chat box. Dear aspirants, Himawari 9. So this was very much in the news, and I think you should know it. Sakshi is writing C. Yes, roaming Kannadiga. Oh, ho, great to join. ये बहुत अच्छी बात है, बट मिस्टर परशुराम कुमार जी इज टेलिंग यस बीटी कॉटन विकास प्रजापति. सो योर आंसर इज करेक्ट, मिस्टर प्रजापति. वेरी नाइस answering this question. So let us have another very important question, and here, okay, I have selected this question for you for your better understanding. Yes, both the answers are correct. Now, with reference to India's ballistic missile defense shield, BMD, consider the following statement. It is an indigenously, what is the meaning of indigenously? Bharat mein bana hua, Swadeshi, indigenously developed interceptor missile system. Yes. And the second statement is the BMD, okay, that is ballistic missile defense shield. This is briefed as BMD, is being developed by DRDO, okay, Defense Research Development Organization, DRDO. जैसे देश में जितने भी मिसाइल बनते हैं वो सब के सब प्रक्षेपित डीआरडीओ के द्वारा किए जाते हैं, और इसरो के द्वारा जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स स्थापित होते हैं वो इसरो के द्वारा स्थापित किए जाते हैं. सो डियर एस्पिरेंट्स, ये दो जो विंग है, इसरो एंड डीआरडीओ, इससे रिलेटेड सवाल आना ही आना है. भारत में जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, रेलवे की, बैंक की, आईएएस की, स्टेट सिविल सर्विसेज की, पुलिस की, जिस भी परीक्षा, these two are there. इसलिए डीआरडीओ और इसरो, ये दो को तो आपको हृदयंगम करना चाहिए. ओके, निश्चित रूप से इनके बारे में, इनकी स्थापना कब हुई, इनसे संबंधित जो विकासात्मक गतिविधियां हैं, उससे आपको निश्चित रूप से रूबरू होना है. आइए देखें इस प्रश्न को. Which of the statement given above is are correct? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. So what's your answer? If you know the answer, please write it in chat box, dear aspirants. India's ballistic missile defense shield, and Raghava has answered both the statements are correct. Both the statements are correct. Now here is a question related to coronavirus. Okay, with reference to coronavirus, which of the following statements are correct? A new strain of coronavirus emerged in United Kingdom. This is correct. Second, it was identified for the first time in Wuhan. Third, India reported its first case of the Wuhan coronavirus on 30th January 2020. Select the correct answer using the code given below: A1 only, B1 2, C1 3, and D1 2 3. Dear aspirants, for your better understanding, D is the correct answer. And the question which I am going to read for you just now, that is $1 million question, because it is IoT, that is Internet of Things.
Internet of Things, Artificial Intelligence, Quantum Physics, these three topics are very, very important, dear aspirants. मई में आपकी परीक्षा है और आप देखेंगे क्वेश्चंस, ये सारे हॉट टॉपिक्स हैं. आइए देखें. With reference to Internet of Things, IoT, sometimes seen in the news, which of the following statement are correct? IoT के परिप्रेक्ष्य में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? नंबर वन, IoT generally refers to scenarios where network connectivity and computing capability extends to objects, sensors, and everyday items. The second statement, IoT devices and services can serve as potential entry points for cyber attack and expose user data to theft. And the third statement, IoT amplifies concerns about the potential for increased surveillance and tracking. Dear aspirants, you have to select the correct answer using the code given below: A12, B23, C3 only, and D123. So here we have, dear aspirants, all the options correct. So let us have, yes, Mr. Raghava, your answer is correct. So it's great to have your answers in such a way that I have nothing to add further. So dear aspirants, now let us see some more questions as far as science and technology is concerned. So अब इन प्रश्नों के साथ साथ हम आपके आपके साथ कुछ अन्य विषयों पर भी जुड़ रहे हैं, डियर एस्पिरेंट्स. और यहां पर, यस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. एक कथन, और वो कथन ध्यान से सुनिएगा, दैट रिलेट्स टू क्लाउड. ओके, क्लाउड बट नॉट क्लाउड, दैट रिलेट्स टू ज्योग्राफी. इट इज cloud computing. Okay, cloud computing is used to process time sensitive data, while edge computing is used to process data that is not time driven. The second statement, cloud computing is preferred over edge computing in remote locations. Now you have to select the correct answer: A1, B2, C both 1 and 2, and D none of the above. Dear aspirants, the answer to this question is none of the above. Both the statements are incorrect. Edge computing versus cloud computing, which one is better? This is the crux of the question. First, it is important to understand that cloud and edge computing are different, non-interchangeable technologies that cannot replace one another. अब एज कंप्यूटिंग से अगर क्लाउड कंप्यूटिंग को आप कंपेयर करना चाहते हैं तो ये वाइस वर्सा नहीं हो सकता है. आई एम नॉट हियरिंग प्रॉपरली बिकॉज हियर प्लेइंग द लाउड स्पीकर. डियर मिस्टर परशुराम जी, दिस इज योर प्रॉब्लम. यहां तो बिल्कुल शांति है. ओके, और मैं रामचंद्रपुर जसीडी देवघर से आपको ये सुना रहा हूं, ये तो शांति भवन है. देयर इज नो नॉइज. ओके, सो प्लीज 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 आप अपने स्थान को बदलें और शांति वाले जगह पे सुने, बिकॉज ये तो लर्निंग है, ये तो आपको 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 आईएएस बनाने वाला क्लास है, तो इस पे आप फोकस करें. सो आई वाज टेलिंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन क्लाउड कंप्यूटिंग एंड एज कंप्यूटिंग. सो डियर एस्पिरेंट्स, दैट कैन नॉट रिप्लेस वन अनदर. एक दूसरे को एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं किया जा सकता है. Edge computing is used to process time-sensitive data, while cloud computing is used to process data that is not time-driven. एक बार फिर मैं इसको सुनाऊंगा, so that you should be able to write it in your notebook, dear aspirants. Edge computing is used to process time-sensitive data. Okay, time-sensitive data, while cloud computing is used to process data that is not time driven. So dear aspirants, the answer is D. Now let us have another very important question, and this is going to be the last question. आज का ये आखिरी सवाल.
उसके बाद हम लोग क्लास बंद करेंगे। डियर एस्पिरेंट्स, टुमारो एट सेम टाइम, दैट इज 7:30 इवनिंग, आई शैल बी ऑनलाइन। तो आज का ये आखिरी सवाल आपके समक्ष देखिए और इसे आंसर कीजिए। Which among the following is are correct in context to characteristics of big data? BIGDATA. Number one, large volume of data. Number two, homogeneous data. Number three, consistent data. And number four, high speed data generation. Select the correct answer code A134, B124, C14, and D all of the above. Dear aspirants, the consistent data, this is not correct. So our answer should be 1, 2, and 4. 1, 2. Okay. Homogeneous data. This is okay. This is also not there. So our answer should be 1 and 4 only. Our answer should be 1, that is large volume data and high speed data generation. So this is the correct answer in context to characteristic of big data. Yes, Kailash ji, your answer is correct. C is the correct answer. And dear aspirants, if you know D10 club, okay, this is going to be the last question. Which among the following is are part of D10 club? India, China, Australia, South Korea. Dear aspirants, 1, 3, and 4, India, Australia, and South Korea are in D10 club. Now it's time to leave you. अब आपसे विदा लेने का समय आ गया, लेकिन एक बात कहना चाहूंगा, ट्राई टू कीप योर रूटीन, try to maintain consistency. Okay, dear aspirants, every morning you should get up early. Get up early, but before sunrise. सूर्य के उदय होने के पहले आप जगें. Touch the feet of your mother. अपनी माता के पांव छुएं. अगर माता आपके साथ नहीं है, take for example you are living in hostel, then what should you do? You please remember, अपनी स्मृति में अपनी मां को लाएं और उन्हें नमन करें, आशीर्वाद ग्रहण करें, पिता के पांव छुएं और आप देखें कि आप किस तरह से खिलते हैं, किस तरह से आगे बढ़ते हैं। सफलता आपके कदम चूमने के लिए बेताब होगी। किसी मंदिर में 250 ग्राम पेड़ा, 250 ग्राम मिठाई लेकर के जाइए। चढ़ाने के पहले आपने 250 ग्राम तौल लिया और चढ़ाने के बाद एक बार फिर से तौलिए। 250 ग्राम का 250 ग्राम ही होगा, यानी उस देवी देवता ने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आप कहते हैं प्रसाद है। डियर एस्पिरेंट्स, व्हाट इज द ट्रूथ ऑफ लाइफ? जीवन का सच क्या है? जीवन का सच यही है, आपकी ईमानदारी, आपकी कर्मठता, आपकी लगनशीलता। और यदि आपने ठान लिया है कि मुझे आईएएस बनना है, तो आप बन के रहेंगे। कैसे? पॉजिटिव एटीट्यूड, जहां भी रहे प्रसन्न रहे। परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होगी, हर घर में समस्या है, हर पल समस्या है। विजेता कौन है? ओम इग्नोराय नमः। सब कुछ भूल जाइए, अपने लक्ष्य को देखिए, वही आपको सफलता दिलाएगा। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन सच ए ग्रेट नंबर। डियर एस्पिरेंट्स, टुमारो एट द सेम टाइम एस एल बी ऑनलाइन। तो तब तक के लिए गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। चलिए।